बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की इंग्लिश न्यू एडिशन यूनिट नंबर 10 जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लेपर्ड एंड मार्खोर के शॉर्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ एक्सरसाइज के। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक ऑल चैप्टर्स के ट्रांसलेशन विद एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती है। आप उन मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बिटवीन द स्नो लेपर्ड एंड द मार्खोर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम? आंसर, the predator-prey relationship maintains the natural balance of the ecosystem by regulating the population of herbivores like the markhor, which in turn helps keep the plant life balance in the mountain regions. Question number 2. How do the snow leopard and the markhor's adaptations help them survive in the mountains? Answer, the snow leopard has wide fur-covered paws to walk on snow without sinking, long tails for balance, and thick fur to survive the cold. The markhor has wide hooves to climb cliffs and a coat that changes with the seasons, offering warmth in winter and shedding in summer. Question number 3. What are the benefits and potential concerns of community-led conservation programs like trophy hunting? Answer, benefits include financial incentives for local communities to protect animals and funding for conservation efforts. Concerns include the risk of overhunting or exploitation if not properly regulated. Question number 4. What might happen to the mountain ecosystem if either the snow leopard or the markhor disappeared? Answer, the balance of the ecosystem would be disturbed, leading to the overpopulation of certain species and the degradation of vegetation and other natural resources, affecting the overall health of the environment. Question number 5. How do human activities like poaching and habitat destruction threaten the balance between the snow leopard and the markhor? Answer, poaching and habitat destruction reduce the populations of both species, disrupting their natural roles in the ecosystem and threatening their survival. Question number 6. How is the markhor adapted to living in mountainous regions? Answer, the markhor has wide hooves for climbing cliffs and its coat changes with the seasons, providing warmth in winter and shedding in summer. Question number 7. What more can be done to raise awareness about protecting endangered species like the snow leopard and the markhor? Answer, more education campaigns, stronger laws against poaching, and community involvement in conservation efforts can help raise awareness about protecting these species. Question number 8. How did the description of the snow leopard and the markhor impact your understanding of these animals and their environment? Answer, the description highlights their unique adaptations to survive in harsh environments, emphasizing the importance of conserving their habitats and understanding their role in maintaining the balance of the ecosystem. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।